Today we are going to discuss solution of question from quadratic equation. This question was appeared in JEE Mains 26. Question में बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब टू द पावर 2 फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन ये टर्म देख के आपको समझ में आया होगा कि हमें बीटा माइनस अल्फा क्यूब ब्रैकेट क्यूब के एक्सपेंशन से बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब मिलेगा. तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है. क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स 0 एंड बीटा माइनस अल्फा दिया है √11. ऑल्सो बीटा स्क्वायर माइनस बी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3i √11 दिया है. तो ये जो दो टर्म है उससे हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा. सो अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ बीटा माइनस अल्फा से तो बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा. हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है 3i √11 डिवाइडेड बाय √11. सो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 3i. नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट फॉर अल्फा इंटू बीटा. तो हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा. तो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अगर कर देते हैं बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -4 अल्फा. We can find out it from expanding beta minus alpha square and beta plus alpha square. So अब beta minus alpha है √11 and √11 square is 11 and beta plus alpha है 3i. So 3i square is equals to -4 into alpha into beta. So 11 and 3i square is -9i. Minus into minus plus. So 11 plus 9 is equals to -4 alpha into beta. Now we have to find alpha into beta. So alpha into beta is equals to 20 divided by -4, which is equals to -5. So we have alpha into beta equals to -5. Now we will find out for alpha square plus beta square. Let's take beta plus alpha bracket square, which will be equals to beta square plus 2 alpha beta plus alpha square. Now we have beta plus alpha, which is 3i, and 3i square is -9. So -9 is equals to 2 into we have alpha into beta is -5. So 2 into -5 is -10 and alpha square plus beta square as it is. So -9 plus 10 is equals to 1. We have alpha square plus beta square is equals to 1. Now let's take beta minus alpha bracket cube. So expand this term. We will get beta cube plus 3 alpha square beta minus 3 alpha beta square and minus alpha cube. Now from this 3 alpha square beta minus 3 alpha beta square, we can take 3 alpha into beta common. So take beta cube minus alpha cube one side of equal sign. So beta cube minus alpha cube is equals to beta cube equals to beta minus alpha bracket cube and remaining term are these two term, which is उसमें से भी 3 अल्फा बीटा हम कॉमन ले लेते हैं. So 3 अल्फा into beta and in bracket remaining term are beta minus alpha. Now we can notice here we can take beta minus alpha common from these two term. So in bracket we will have beta minus alpha bracket square plus 3 अल्फा into beta. अब हमें बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब ब्रैकेट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो बोथ साइड से स्क्वायर ले लेते हैं. बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज √11 स्क्वायर एंड बीटा माइनस अल्फा square is again 11 square. So beta minus alpha square is equals to 11 minus 15 because alpha into beta is -5. Now 11 into 16 is equals to 176. And this is our final answer. Bye-bye.